Hello everyone. I hope everyone is doing great and welcome back to this channel after days. I think it has been quite a few days that I uploaded a video. So basically here today we are going to discuss as to what should be our strategy to read newspaper for our interview preparation basically. तो जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो इट इज़ एक्चुअली फ्रॉम इंटरव्यू परस्पेक्टिव थिंग्स चेंज a bit. I won't say it changes completely. There are a few news items or articles which are relevant for both prelims, mains, and also for interview. But there are a few issues which we actually tend to ignore while we're studying for prelims or mains, but they might be important for your interview. Okay. Also there was a doubt as to like which articles to read and which to ignore, because देखो अभी तो you are studying I think every maximum like aspirants are studying Assam Tribune or some are studying Hindu and Indian Express as a for the national level newspaper, right? Now what I think is that when you're studying for multiple papers which you should for interview, तो उसमें होता है ये कि यू आर स्टडिंग असम ट्रिब्यून ऑल्सो एंड इंडियन एक्सप्रेस ऑल्सो सपोज, और असम ट्रिब्यून एंड द हिंदू, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट एज टू कितना पढ़ा जाए, बिकॉज दो न्यूज़पेपर कवर करना एक दिन में इट बिकम्स डिफिकल्ट समटाइम्स, राइट? सो आई डिसाइडेड दैट although there are a few things on which I had to make videos, but I don't have much time, and also interview might be held soon only, I think, because अभी तो अगस्त हो गया है. अगस्त में तो they did not declare result which was expected, because इतने जल्दी तो नहीं आता है. तो September end maybe the result will come, then again so you can say that you have 20 days minimum to maximum say 50 days, 20 to 50 days you have for preparation. सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट एटलीस्ट लास्ट एक महीने का न्यूज़पेपर अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू काइंड ऑफ टैकल द इंटरव्यू. नाउ व्हाई आई एम सेइंग लास्ट 1 month, सी बिकॉज इट इज़ नॉट हैपन दैट आज आपका इंटरव्यू है तो आपने कल का न्यूज़पेपर बस पढ़ लिया, ठीक है? यू हैव टू फॉलो अप ऑन सर्टेन थिंग्स, एंड ऑल्सो व्हेन यू रीड न्यूज़पेपर यू विल रियलाइज दैट यू सॉर्ट ऑफ डेवलप अ पर्सपेक्टिव, ठीक है? एक चीज़ों को समझने का एक तरीका आप में आ जाता है, एंड देन व्हेन यू आंसर इट शोज इन योर आंसर दैट ओके यू हैव अंडरस्टूड द इशू, और इफ यू आर अवेयर दैट ओके दिस इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग, थिंग्स हैव बीन हैपनिंग. ओके, सो दैट्स द अप्रोच ideally. So basically that's why I decided to make this video separately for interview purpose. I'll also bring out a video for prelims and mains as to how do we study the newspaper from prelims and mains perspective. So prelims mains mein it's almost similar with a few difference there also, but interview mein there is a few things which I would like to tell you, and today I'll also take today's newspaper of say the Indian Express and Assam Tribune to explain you that. Okay, so my name is Ayushi Kalwar. Currently, I'm serving as an IRS officer. In last year's examination, I had ranked 16 in ACS, and this is something about me if you are here for the first time. And there is a Telegram channel. So, the link of the Telegram channel I'll give it in the description. So it's recommended that you join the channel, because that's I believe that's an effective way of communication, or it's good if you join, because you will stay updated, and also you can subscribe to this channel for the updates whenever I post it. Okay, so what will be the approach here is that I'm going to explain you basically. First thing is like what to read from newspaper, and second would be I'll explain as to how the questions can be asked from that topic, how the questions will be asked, how the questions can be framed, okay, from that topic, or like what sort of questions can be asked. The third thing which I'd like to tell you is yes, this one, the difference in newspaper reading for interview, mains and prelims. Okay, so these are 3 things which we will be discussing today, and उसके बाद अगर कुछ और भी रह जाता है या फिर कुछ और मुझे लगा कि ये बताना है ज़रूरी है इंटरव्यू के लिए, तो that also we'll see. Okay, so we'll start with the newspaper. Say we'll start with Indian Express maybe. Okay,
Indian Express. So this is today's newspaper, right? I hope so. Yes, this is I'll just okay. So this is September 1st, today's newspaper of Indian Express. So you can read Indian Express, you can also read Hindu, matlab either or. Okay. Now suppose I have this newspaper with me, how do I identify and read? Now here one thing I would like to tell you is that किसी दिन हो सकता है कि न्यूज़पेपर में you have only 3-4 items which are important for your examination or interview. There may be other days where the interview kind of the articles may be like 7-8 articles or 9 articles maybe which are important for your interview. Now don't get overwhelmed by the fact that कि आज तो 10 articles पढ़ने हैं. At least read 5 of them, no? At least identify and read 5. That will also solve the purpose. At least you will get habituated. तो अभी क्या होगा कि आप habit develop करेंगे अगर पढ़ने का, तो that will help. Okay, now let me start with this newspaper today. See, I have this newspaper with me. इसमें government call special session of parliament, not important. UAE not important. Pandora, no, not important. G20 meeting, obviously G20 meeting as such is important. Now यहाँ पे newspaper is also acting as a reminder as to कि ये चीज़ें आपको पढ़ लेनी चाहिए. ये अभी current event है, current में चल रहा है. People ask what topics to read for interview from the current events. So this is how you will get to know. Okay, अगर मुझे भी identify करना होगा कि क्या क्या मैं पढ़ूँ अपने interview के लिए, तो I'll pick up the newspaper and then read about it. तो अभी G20 के बारे में हो सकता है यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हैं might not be asked per se, but yes, G20 as a topic is very important. इसमें आपका question भी आया था मेंस में, which was quite expected. G20, see the kind of the meetings were held in Guwahati also. So from that perspective also आपको G20 के बारे में पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा कि what can we expect from G20 when it comes to the development of Northeast, like that. So can we expect that there will be investment in the Northeast, through the channels of G20, or how do we portray ourselves as the potential investment destination? ठीक है कि हमारे यहाँ पे investment हो, ऐसा हम कैसे portray कर सकते हैं on the international forum like G20. ठीक है. Now it's G20 is obviously पूरे इंडिया को represent करेंगे हम when we are in G20, but when it is happening in a particular location, obviously that location का importance भी आ जाता है थोड़ा सा, and then we can also have some local kind of basically local solutions को हम निकाल सकते हैं through those forums. Okay, because then the place comes in limelight. तो वो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें आपको ध्यान से जो भी जब गुवाहाटी में हुआ था या हो रहा है उस चीज़ों को आपको निकाल के उसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा टू डेवलप अ पर्सपेक्टिव एज टू व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट. यहाँ पे डायरेक्टली आपको नहीं मिलेगा वो चीज़ें. यहाँ पे तो इट इज़ जस्ट सेइंग सम अदर मैटर ऑफ चाइना ये टू कंफर्म इफ वी विल अटेंड G20, बट दैट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट. बट येस, G20 एज अ टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया. Services give fillip to growth. This is what I'm reading. Services give fillip to growth, GDP up to this. Okay, एक तो in general GDP के बारे में you should know कि GDP as such एक तो ब्रॉड पर्सपेक्टिव ये आपको जानना चाहिए कि इंडिया का ग्रोथ रेट कितना चल रहा है, क्या है. एंड असम का भी GDP ओवरऑल GSDP विच वी कॉल, स्टेट का GDP को वी कॉल GSDP, राइट, GSDP. So this GSDP is something which you should know. Budget में you will get the idea. जो असम का budget है, I'd also suggested that you should read the latest Assam budget, right? So this idea you will get it there. और yes, obviously services sector play a great role in our GDP, we know that. तो उसका broad idea एक लेके चलेंगे तो it's fine. अगर डिटेल नहीं भी पढ़ा है, does not matter. अप्रैल जून का ये दिया हुआ है, it's fine if you don't read, but yes, you can actually recall the topics कि अच्छा ये पढ़ना है मुझे. ठीक है, इसको पूरा आर्टिकल को पढ़ने की ऐसा ज़रूरत नहीं है. अगर पढ़ेंगे तो ये होगा ना that you will develop a perspective if you read the entire article. But even if you don't do it, just have an idea कि अच्छा GDP में the services sector play a great role, and then what is the share of manufacturing sector, what is the share of agricultural sector, those things. Okay, all right, moving forward. This is the city, not important. इस city वाला पेज तो anyway this not important. इस city वाला पेज उस city का होगा, मतलब this is Delhi से publish हुआ है ये पेपर, तो प्रिंट हुआ है तो वहाँ का इंफॉर्मेशन है. तो this is but this is page 1 not important. ये तो हो गया, हमने देख लिया था. पेंडोरा प्रोब नथिंग, अदानी वो सब not important as such.
बट येस अगेन उसमें इकोनॉमिक ऑफेंडर वाला कंसेप्ट थोड़ा बहुत यू शुड हैव एन आइडिया, बट पर्टिकुलर पर्सन का न्यूज़ इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट अनटिल एंड अनलेस इट्स अ वेरी गुड एंड बिग अवार्ड समथिंग लाइक दैट, ठीक है. तो अदरवाइज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट. City again, ignore. Okay, just okay. Not important. Government and politics वाला पेज तो you can ignore only. It's not so important. Most of the time उसमें कुछ ऐसे दिया होता है, it's not so relevant. But जैसे कि suppose ये दिया है, PM tweets in Sanskrit, asks user to follow suit. Now इसमें क्या important है, just see, ये World Sanskrit Day, this might be important, you know, especially when something which the Prime Minister is doing, something the Prime Minister is tweeting about, or something the Prime Minister is speaking about in Mann Ki Baat program, वो चीज़ें ऐसी हैं जो पैनल में the members are there, now they listen to news channels or they at least hear the headline, तो उनके दिमाग में वो चीज़ें रहती हैं. Therefore it's recommended कि आप जैसे न्यूज़ हेडलाइन वगैरह वो सब सुनिए थोड़ा सा, you know, at least when you are nearing the interview day. उसमें क्या होगा कि एटलीस्ट यू विल नॉट बी ब्लैंक, तो थोड़ा बहुत तो पता होगा. तो ये न्यूज़ एज सच इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट येस वर्ल्ड संस्कृत डे होता है एंड कैसे लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए वी एक्चुअली सॉर्ट ऑफ शुड हैव दिस काइंड ऑफ डेज, ये सब थोड़ा सा जस्ट नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट येस जस्ट टू हैव अ ब्रीफ आइडिया, ठीक है. Referred to Sanskrit as the mother of many modern languages. So this you can use also in some answer, no? That how can you know, we always talk about India being the Vishwa Guru. तो उसमें संस्कृत का बहुत ज़्यादा रोल आ जाता है. How Sanskrit's role has been there, and you know, there were many great scholars of Sanskrit, great mathematicians and great you know, doctors जो उस ज़माने के doctors थे. You know, there was Shushruta if I'm not wrong. So वैसे क्या काफ़ी ancient medicines वगैरह भी जो है काफ़ी पहले से चलती आ रही हैं. तो यू जस्ट लिंक द टॉपिक लाइक दैट एंड स्टडी थोड़ा सा, जस्ट टू हैव एन आइडिया. सो व्हेन वी आर सेइंग दैट सपोज द क्वेश्चन इज थ्रोन, जैसे लास्ट टाइम मुझे वासुदेव कुटुंबकम के बारे में पूछा था, तो दिस वन दे कैन आस्क यू समटाइम्स कि वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया बीइंग द विश्व गुरु, हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट, डू यू थिंक दैट इन द पास्ट वी हैव डन समथिंग लाइक दैट टुडे वी आर सेइंग दैट इंडिया कैन बी अ विश्व गुरु, ऑब्वियसली. तो उसमें यू कैन लिंक लैंग्वेज, मेडिसिन, एडवांसमेंट इन द एस्ट्रोनॉमी, कैसे आर्यभट्ट थे, एंड एवरी वन हैड ऑलरेडी प्रेडिक्टेड अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो दोज आर द थिंग्स विच यू शुड थोड़ा सा हैव एन आइडिया. एवरी इंडियन शुड नो, एंड यू इन पर्टिकुलर शुड नो दिस काइंड ऑफ आइडिया. दिस आर द ब्रॉड थिंग्स. यू विल नॉट फाइंड इट इन सम न्यूज पेपर और समवेयर. दिस इज आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, यू हैव टू नो एंड ट्राई टू आंसर. ओके, this just came in my mind, so it can come in the mind of the interviewers also. They can ask. Okay, 370 was called no, not important. Then centers promise to top quote, no, not important. Government, what ails government flagship health plan at AIMS, high implant cost and running special test. एम्स वाला न्यूज़, एनीवेज थोड़ा बहुत एम्स का यू शुड नो एंड यू शुड हैव एन आइडिया ऑफ आयुष्मान भारत. जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स है उसको तो आप एक बार फिर से गो थ्रू कर लीजिए, जो आपने पढ़ा है, विच यू हैव स्टडीड फॉर योर प्रीलिम्स एंड मेंस. द इंपॉर्टेंट स्कीम्स यू शुड बी नोइंग कि भाई आयुष्मान भारत योजना है, व्हाट ऑल आर देयर, व्हाट हैव बीन द अचीवमेंट्स, दोज थिंग्स, दैट्स इट. इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है. दिस आर लाइक अगेन असम फ्लड्स हिट ओवर 4 लाख पीपल. अब हियर लाइक टू टेल यू वन ट्रिक. जो भी न्यूज़पेपर में, मतलब जैसे कि हिंदू हो गया या फिर इंडियन एक्सप्रेस हो गया, जो नेशनल लेवल का न्यूज़पेपर है, उसमें अगर कोई असम का रिलेटेड कोई इशू है, if something related to Assam or Northeast has been there as an article or some highlighted news, कोई important news है, you should not skip that is you know, my idea, because वो एक important issue है and you should know it. तो असम का फ्लड का issue, it has been covered in the like Assam Tribune also today. So ये obviously you should read. This is understood. Okay, next, it is India's responsibility to bring divided world together. See, this is a kind of news item which many people will ignore, I know. इसमें क्योंकि this is the news I'm talking about, this is a statement made by our foreign minister S. Jaishankar. Now इसमें इन्होंने क्या बोला है कि it is India's responsibility to bring divided world together. Now this is not important from prelims perspective or from mains perspective. Maybe from mains perspective a bit, no, but never from prelims perspective. But this can be important in your interview.
because it will help you to frame an idea कि क्या है, what are the views, you know. अब देखिए, मैं एक चीज़ यहाँ पे आई लाइक टू टेल यू that when most of the times you will see that जब कोई सवाल पूछा जाता है तो we try to answer it in a very general way. So when you read this kind of articles of, you know, something which our foreign minister had said or something which some great agriculturist or scholars have said, तो उससे you develop your own viewpoint and perspective which actually enriches your answer. Okay, तो यहाँ पे let us just go through this news item. Okay, it is India's responsibility to bring a divided world together. Okay, that's what he has said. Next is when the world is struggling with challenges such as good health, good education, good nutrition, good water, good energy, and environmental changes. The world is divided into developed countries in the north and developing countries in the south. And due to the Ukraine war, countries are being polarized into east and west. We are in the middle of this, so it is our responsibility to bring the divided world together. See, this you can add in some kind of answers whenever you are asked as India's role today in G20 or India's role in BRICS. BRICS is something which is in news. Okay, तो ये सारे जो international forums थे, see, international affairs and international news are always important. And what is India's role in that? तो इसमें आप कुछ भी बोल सकते हैं, या तो कुछ भी बोले, या फिर you frame your answer or you read this kind of articles which actually sort of show you the perspective. ठीक है, एक आपको एक एक्सपर्ट व्यू मिला. अजय शंकर इज क्वाइट एक्सपर्ट बिकॉज ही इज डीलिंग विद द अफेयर, सो ही इज देयर. और उनका एक स्टेटमेंट आया है, तो ऑब्वियसली व्हेन यू यूज दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट इट एक्चुअली शोज दैट यू हैव अंडरस्टूड व्हाट थिंग्स आर, यू गेटिंग इट. तो ये डायरेक्टली कभी क्वेश्चन आपको पूछेंगे नहीं कि जयशंकर ने क्या बोला था, बट येस, इफ समटाइम्स इंडियाज रोल इन द वर्ल्ड इन द ग्लोबल स्टेज इज आस्क्ड, दिस इज समथिंग विच यू कैन डेफिनेटली टेल. ओके, सो इस पर्सपेक्टिव से आपको इंटरव्यू के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना है. आई होप यू गेट इट. यहाँ पे कुछ आपको याद नहीं करना, मेमोराइज नहीं करना, विच वी डू फॉर प्रीलिम्स और मेंस. यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड जस्ट रीड. इट्स लाइक दैट. ओके, ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड. अगेन चंद्रयान तो एनीवेज इज इम्पॉर्टेंट. चंद्रयान 3 वेरी इंपॉर्टेंट. चंद्रयान 3 के साथ एक और चीज़ इंपॉर्टेंट आ जाता है, इज द रोल ऑफ इंडिया इन स्पेस एंड वॉट ऑल इंडिया इज प्लानिंग. आगे आदित्य L1 मिशन इज ऑल्सो आई थिंक प्लान्ड. तो वो सब कुछ आप मिला के जस्ट रीड अबाउट इट. ओके, तो आदित्य L1 मिशन इज समथिंग विच इसरो इज प्लानिंग फॉर द सन, फॉर स्टडिंग द सन. तो उसके रिलेटेड भी यू शुड नो. तो इसरो वगैरह, सी अनदर पेलोड डिटेक्ट्स द सल्फर प्रेजेंस. तो सल्फर प्रेजेंस इन द मून हैज़ बीन डिटेक्टेड बाय द पेलोड ऑफ चंद्रयान 3. आई होप ऐसा ही कुछ है. तो यू जस्ट रीड दिस काइंड ऑफ न्यूज आइटम्स, ठीक है, बिकॉज दिस आर इन न्यूज. एंड चंद्रयान 3 विल बी क्वाइट अ हॉट टॉपिक फॉर द नेक्स्ट 1 year ऑल्सो, यू कैन से, और 2-3 months में तो रहेगा ही. तो देयर इज अ चांस कि पूछा जाए. तो ऐसी चीज़ें, बड़ी बड़ी न्यूज जो है, न्यूज़ में चीज़ें हैं, यू शुड रीड इन डिटेल इज वट इज द अंडरस्टैंडिंग. ओके, तो दिस इज वट इट इज. मूविंग फॉरवर्ड, current decolonization. These are the articles which you can read. अभी as such important नहीं है, लेकिन yes, when you read, you develop and your perspective widens. That will help you in answering the questions in the interview. Okay. Once more. Okay. This is how it is. Not so important. Not so important, but yes, थोड़ा बहुत you can just have an overview, otherwise not so important. This one, after India, Philippines, Malaysia reject this one completes. See, Australian schools lead to revival of fading indigenous languages. So languages is something which एक broad perspective से आप पढ़ के चाहिए कि languages कैसे क्या होता है, languages को preserve करने के लिए what will you do, how to preserve culture, language, ये सब कुछ. Okay, again I told you about this one, BRICS जो organization है. तो इसका अभी summit भी हुआ था साउथ अफ्रीका में. तो you should know about it. BRICS में इंडिया का क्या रोल है, how will BRICS help नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, like that. BRICS is important. In something like this you can just have a overview. इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, but yes, Kokborok is a Tripura's language. इतना जानना is enough, not so important. अगर नहीं भी पता है तो it's not a big deal, but major issues we should know. Okay. Okay, so I think we are almost done. इसमें इकोनॉमी का
इकोनॉमी का आर्टिकल इफ यू रीड इट्स गुड, थोड़ा जीडीपी वीटीपी ग्रोथ रेट वो सब के बारे में यू शुड रीड, जो बताया था मैंने, ठीक है. I think we are done. So this is the newspaper, Indian Express. Now we'll just quickly see Assam Tribune and what all we can study. So this is Assam Tribune of 1st September. Assam oncologist wins Magsaysay award. थोड़ा सा important, just know the name and yes, cancer hospital के बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए, कहाँ कहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल्स आर देयर और हाउ आर दे फंक्शनिंग, थोड़ा बहुत, इतना नहीं, जस्ट द जनरल सिचुएशन ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़ इन असम, ये इंपॉर्टेंट है, बस ज़्यादा कुछ नहीं. एंड जस्ट सी जट अच्छा मैगसेसे अवार्ड मिला था बिकॉज दैट्स अ क्वाइट नोन अवार्ड, और ये डॉक्टर आर रवि कनन को मिला है. आई थिंक ही इज़ फ्रॉम सिल्चर कैंसर हॉस्पिटल. तो ये बस, नॉट मच. नेक्स्ट येस, सराइदेव मैदाम्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये सराइदेव मैदाम्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के टेंटेटिव लिस्ट में रखा गया है. इट इज़ इन द टेंटेटिव लिस्ट, इट विल बिकम और इट माइट बिकम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, एंड व्हाट आर द गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन दैट फ्रंट. ओके, नाउ व्हेन वी asked a general question on how do we attract tourism in Assam or Northeast, so these are the ways, when a body like UNESCO is designating a UNESCO World Heritage Site का स्टेटस अगर मिल रहा है किसी किसी जगह को, तो ऑब्वियसली दैट अट्रैक्ट्स टूरिस्ट. सो दैट्स अ गुड वे टू sort of give a boost to the tourism in Assam and also in other places. I think there was some interruption, sorry for that. So I was saying that, see, this Saraidev Moidam, this has been in news for a while now, or this is something which is in the tentative list of UNESCO World Heritage Site. Now what is the tentative list? तो कोई भी अगर जो साइट है, whenever a site is to be included in a UNESCO heritage site, World Heritage Site, it has to fulfill certain condition. So which the probable sites which might qualify for the kind of requirement to become a World Heritage Sites are kept in the tentative list, and slowly and gradually जो बाकी qualifications है, it kind of tries to fulfill to get into the list. Now ये जो UNESCO का list है basically, this, if a place is included in the kind of World Heritage Site, obviously it is something which will attract tourists. Okay, so abhi whenever you are asked a question as to how do we boost tourism in Northeast or Assam, so this can be one of the examples which you can give. When you give this example, the interviewer, he or she knows that okay, you are aware of things which are happening and which can actually give a boost to tourism in Assam. Okay, so these are the things which you have to see and look for when you're studying from the perspective of interview. Now this news item obviously is not only important from interview, it's also important for prelims and mains. Okay, so there can be overlap, but again there are a few things which are exclusive for your interview. Okay, moving forward, see this news also we read in that Indian Express today. It is India's responsibility to bring divided world together. तो obviously अगर दो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो एक चीज़ को फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. You can ignore it, or you can study Assam Tribune only and do not study Indian Express. But I suggest two newspaper because कई बार important और भी issues होते हैं national और international level पे, which is covered in Indian Express and Hindu properly. So that's why I suggested. Okay, but I think you should not miss on newspaper or like Assam Tribune. ठीक है. Moving forward, opposition has come together to say constitution not important. Student suicides very serious issue, President Murmu. Now, this is a news which you will not study for prelims, and probably you can study for mains when you have to write some question on your Indian society ka question if something comes on that. But this is a question, or this issue as such is quite important in the society today, right? Especially student suicides. So this can be a question in interview sometimes ki acha, how do we what are the solutions to tackle and to reduce the kind of number of suicides among students? How can we reduce the stress? Those are the things which might be asked. So as such इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है पूरे article को. You can read if you want a different perspective, but yes, you should be ready with some kind of answers as to हाँ ये हो सकता है. See, these are the topics for which you really don't have to go through some books. These are general ideas. What do you think and are the reasons for such suicides and what can be done? That's it. क्या प्रॉब्लम है और क्या सोल्यूशन है, उस पर्सपेक्टिव से आप हर एक चीज़ को देखिए एंड थिंग्स विल बी ईजी फॉर यू. ओके, तो दिस आर द न्यूज़ विच इज़ लाइक अ रिमाइंडर फॉर यू दैट येस यू कैन स्टडी दिस, बट यू मस्ट स्टडी दिस आर्टिकल,
No, not important. Okay, next would be examination strain, not important. This news, Sonowal inaugurates roadshow on GMIS, like Global Maritime India Summit के बारे में है, तो you can read about it. Global Maritime जो summit है, you can just have a overview about this. PM Swanidhi scheme, again I told you that important scheme should be on your tips, not the details, but yes, if I'm asked about PM Swanidhi, I had studied it like 3 years back. PM Swanidhi is for street vendors, that is something which you should know. तो ये एक आइडिया होना चाहिए, बस इतना कुछ नहीं है. आयुष्मान भारत में यू शुड नो दैट व्हाट आर द काइंड ऑफ एलिजिबल पीपल, और पर फैमिली मिलता है कि किसको मिलता है, वो सब थोड़ा बेसिक आइडिया, दैट्स इट. उतना डिटेल में नहीं चाहिए कि क्या होता है, क्या हुआ है, थोड़ा ब्रॉड आइडिया. ओके, यू गेटिंग इट. So just you don't have to read entire thing, for this PM's money. You just know that there is a scheme like that for the street vendors. I think this was launched during COVID only, if I'm not wrong. CII holds MSME conclave. Again, something related to MSME, something related to industries, development. It becomes important. Now directly कोई पूछेगा नहीं कि बताओ CII जो conclave किया था उसमें क्या हुआ. No, but yes, this can be a solution, or you can add this to your answer कि yes, a few days ago, last month, CII also had done this for the MSMEs to give a boost to them. Now what exactly is said here is, see, so पढ़ भी लेते हैं इसको. The Confederation of Indian Industries today organized the Northeast MSME Conclave with the theme of creating enabling business environment for MSME. Business environment को enable करना, so that the people set up their business here. If they set up their business here, what will happen? Employment will be generated for the local people here. What will happen if the employment will be generated for the local people? They don't have to migrate to other cities. And then if they don't migrate, obviously they can save more. अगर 50,000 जाके, if I am earning it in say Bengaluru or Delhi, and I am earning 50,000 in Assam, so which is best for me? You're getting the idea, right? And also they don't have to go to the other cities, and यहाँ पे family distress भी कम हो जाएगा. And then जो feminization of agriculture हुआ है, उस issue को भी हम थोड़ा सा resolve कर पाएंगे, because then women are actually facing the dual burden of maintaining the farmlands and maintaining the family and children, triple burden. तो वो सब चीज़ों को link करिए आप. You're getting it? So that's how you have to link and study. तो इसको यू कैन जस्ट गो थ्रू वंस जस्ट टू हैव एन आइडिया. सी, ये जो पढ़ेंगे आपको याद नहीं रहेगा वर्ड बाय वर्ड आर्टिकल. दैट्स हाउ द ह्यूमन ब्रेन इज. अगर आपने 10 पेज पढ़ा है तो हो सकता है उसका एक पेज आपको याद हो, मे बी, एंड दैट टू वी आर नॉट श्योर. अगर उतना भी याद है तो भी दैट्स लाइक सफिशिएंट. यू डोंट हैव टू नो, बट येस, इफ यू रीड दिस समथिंग विल स्टे, एंड इफ यू डोंट रीड, बस ऊपर से पढ़ के चले गए तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा. तो एटलीस्ट इफ यू रीड इंटायर थिंग जस्ट टू हैव एन आइडिया कि भाई हाँ ये हुआ है, तो कुछ तो रहेगा दिमाग में. That is the idea. Okay, now moving forward, आगे देख लेते हैं if there is something else. So you've seen, right, what happens when we have identified, हमने 6-7 articles वहाँ पे भी देख ली Indian Express में, यहाँ पे भी almost we have 4-5 articles. So total around 8 to 10 articles you target. If you don't have time, at least do 3+3. Or if you're doing from one newspaper, I suggest 2. But anyways, if you don't have time, एक newspaper से कर रहे हैं तो at least do 5. Okay, that's the idea. India in BRICS, again this was the news which I covered in Indian Express also, so you can ignore it or you can read it from one place only. That's the idea. Okay, India in BRICS, what is expected and what can actually BRICS as a forum, how can India utilize it to strengthen its global position in the world arena? Questions like that, simple question. And BRICS is also in news. अभी हुआ था summit, plus BRICS में there are few members, new members who are they are going to be added. I think from 2024 से वो full fledged member बन जाएंगे, तो वो भी आपको एक बार देख लेना चाहिए कि which countries are there. Okay, read it once, I'll suggest. Moving forward, Russia वाला issue, if you want you can study, but that has been an ongoing issue. If you want you can ignore, just have a broad idea क्यों हुआ था, क्या हुआ था, that's it. Peace and solutions. The opening of flyover at Maligaon. Okay, these are not so relevant, but okay, मतलब एक बार if you want to glance through it. Okay, what else? So this is it. I think this is almost done. See, something specific to your district comes, if you're from Barpeta district and something specific from your district comes, तो हो सकता है आप एक बार वो पढ़ लें just for the sake of it.
ठीक है, maybe you can be asked questions on that, we don't know. Anything related to Shankar Dev, Madhav Dev, those things, culture related, Assam related, एक बार पढ़ लेना चाहिए, is what I understand. ठीक है, I think that's it in this news paper. Again, violence in Manipur as a broad issue आपको पढ़ना पड़ेगा, वो जो मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था. ठीक है, एंड देन अगेन डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में पढ़ना इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है, जो डिलिमिटेशन कमीशन का जो भी और भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं कि नहीं है. आई होप यू नो दैट डिलिमिटेशन कमीशन इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बट येस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. ऐसी चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करके थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कीजिए. थिंग्स विल बी ईजियर फॉर यू. ओके, I think that is it almost. An international issue, if you're studying from Indian Express or the Hindu, you can ignore it in Assam Tribune. You can study it from there only. Otherwise, you can do. And international issue में सब कुछ important नहीं है. जैसे BRICS is important, G20 is important, something in which India's interest lies, वो ज़्यादा important है. या फिर कुछ बहुत ज़्यादा major issue अगर चल रहा है तो. But अगर कोई बहुत ज़्यादा major issue चल रहा है तो obviously it will affect all the countries including India. तो वो सब कुछ ठीक है. I think somewhere I had seen some news of nuclear power plant also. तो nuclear energy वगैरह के बारे में you should know. बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि nuclear energy is non-conventional energy, but it is non-renewable. It's not a renewable energy. Many people make this mistake of understanding nuclear energy as a renewable energy. Okay, so you should know that जो material use होता है nuclear power plant में, that is sort of non-renewable, uranium and all, right? Therefore, it is not considered as a renewable source, but yes, it is non-conventional. So this is how you study conceptually and understand the basics also. Because if you make mistake in basics, that will not leave a good impression. अगर आपको बहुत कुछ टफ पूछा है जैसे, या फिर कुछ ऐसा पूछा है जो न्यूज़ में है, सपोज कुछ भी एक कोई स्पेसिफिक रशिया यूक्रेन का स्पेसिफिक कुछ पूछ लिया बहुत ज़्यादा कि ये जगह एग्जैक्टली क्यों न्यूज़ में था या फिर क्या हुआ था, अगर आप ये फॉरगेटिंग नॉट सो embarrassing thing, but अगर कोई बेसिक चीज़ आपको पूछा है, सपोज यू आर आस्क्ड अबाउट असम फ्लड्स एंड यू आर नॉट able to sort of give good reasoning and answer properly, then that's a problem. Otherwise no. See, असम फ्लड क्यों होता है, क्या कर सकते हैं, those are the basic things which you should know. इसमें इतना कुछ there is nothing which is technical. And also ऐसा कुछ नहीं है कि suicide का issue will be asked only to humanity student or engineering student or commerce student को नहीं पूछेंगे या फिर medical को नहीं पूछेंगे. It can be asked to anyone. That's a common social issue and concern which actually affects many. तो वो सब पूछ सकते हैं, राइट? देयर इज नो कंपार्टमेंटलाइजेशन एज सच कि भाई ये पढ़ना है ये नहीं पढ़ना है. तो ट्राई टू हैव अ ब्रॉड पर्सपेक्टिव एंड थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ सिविल सर्वेंट. आई हैव सेड दिस अर्लियर ऑल्सो. आप वैसे सोचिए कि आपको चीज़ों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा. आपको हर एक डिपार्टमेंट में काम करना पड़ सकता है, कि किसी भी डिपार्टमेंट में काम करना पड़ सकता है, राइट? तो यू हैव टू कीप दैट थिंग इन माइंड एंड प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू. इंटरव्यू इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, बहुत ही आराम से निकल जाता है. जस्ट आंसर इट पोलाइटली एंड जेंटली. जितना आता है उतना बताइए, नहीं आता ठीक है कोई बात नहीं. इफ़ यू सपोज फॉरगेट द नेम ऑफ द पर्सन हु गॉट दिस अवार्ड जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, आई थिंक आई ऑल्सो फॉरगॉट, हाँ रवि कनन. तो रवि डज नॉट मीन दैट आपने कोई बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया. इट्स ओके, जस्ट से दैट येस आई रिमेंबर समवन फ्रॉम कछार कैंसर हॉस्पिटल गॉट, बट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम एट द मोमेंट. आई एम फॉरगेटिंग इट, दैट्स इट. आई डोंट नो द नेम. इतना बोल के निकल जाएंगे, दे विल नॉट जज यू, दैट्स फाइन. ठीक है, तो बेसिक चीज़ें आप अपना स्ट्रॉन्ग रखिए एंड मूव फॉरवर्ड. जैसे आयुष्मान भारत क्यों है, अगर आपको ये नहीं पता कि इट्स रिलेटेड टू हेल्थ स्कीम, इट्स अ हेल्थ स्कीम, तो फिर दैट्स अ ब्लंडर. अगर आयुष्मान भारत में कोई स्पेसिफिक चीज़ याद नहीं है, कोई बात नहीं, इट्स ओके. वी टेंड टू फॉरगेट थिंग्स, ओके, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. सो आई होप दैट आज से ही आप शुरू करेंगे न्यूज़पेपर थोड़ा बहुत पढ़ना. एटलीस्ट ट्राई टू रीड 2-3 आर्टिकल्स, देन इंक्रीज इट टू 5 ऑन एन एवरेज. अभी लास्ट मंथ है फॉर योर प्रिपरेशन. आई होप दैट यू विल डू things nicely and things will work in your favor, and all the best for your result. I think result I just don't know exactly, but it can be expected in September only or maybe October by latest if things are normal. Okay, so see you in the next session, and do join this telegram channel. I'll give the link in the description and also in the comment section, and also subscribe to this channel so that you stay updated, because मेरा वीडियो का कोई perfect schedule नहीं है कि every Monday I'll bring video like that. Whenever I get time I make a video. That's how it is. Therefore it's recommended that you join this channel and join the telegram channel as well, and this YouTube channel as well. Hoping that you clear the examination. Wishing you all the best, and I'll bring something for prelims and mains also. Thank you so much.